Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I am Mumtaz Sultan, your biology teacher. Today we will discuss pollination and fertilization. In the previous lecture, we have discussed structure of flower. The flower components are arranged in the form of whorls. The outer two whorls in a flower are non-reproductive whorls, while the inner two whorls are the reproductive whorls. Reproductive whorls are androecium, male reproductive part of the flower, and gynoecium, which is female reproductive part of the flower. Androecium produces haploid microspores by the process of meiosis. Similarly, gynoecium produces haploid macrospores by the process of meiosis. Pollination. When pollen grain matures, they are transferred to the stigma. It is called pollination. When pollen grains mature, they are transferred to stigma. From anther, pollen grains produced in the anther and they are transferred to the stigma. This is carpel. This part of the carpel is called stigma. This is style and this is ovary. When this is the male reproductive part of the flower and this is the female reproductive part of the flower. This is called androecium. This whorl is called androecium and this whorl is called gynoecium. Pollination. When pollen grain mature, they are transferred to stigma. It is called pollination. Pollen grain transferred to stigma. This is called pollination. In this case, pollen grain are transferred to the stigma of the same flower. In this case, pollen grain are transferred from one flower, anther of the one flower, to the stigma of another flower. But in both cases, pollen grains are transferred, and this process is called pollination. On reaching the stigma, pollen grain, when reach on the stigma, the tube nucleus of pollen grain construct a pollen tube. Tube nucleus of the pollen grain construct a tube nucleus of the pollen grain. There are two nucleus which are present in the pollen grain. One is tube nucleus and other is generative nucleus. And tube nucleus of the pollen grain construct a pollen tube. And in the pollen tube, the pollen tube contains a tube nucleus and two sperms. How many sperms are present in the pollen tube? Two sperms are present in the pollen tube. And one pollen tube nucleus is also present, which construct a pollen tube. Two sperm nuclei, two sperms are present in the pollen tube, and pollen nucleus is present at the tip of the tube nucleus is present at the tip of the pollen tube, which form the pollen tube.
and both these sperms enter into the ovule. You can see here, this is stigma, then pollen tube reaches the ovule through, this is style, stigma, and this is ovule. In this ovary, many ovules are present here. Pollen tubes, one of them enter into the ovule. Double fertilization. In the ovule, pollen tube in the ovule, this is ovule, this is a single ovule, pollen tube bursts and releases the sperms. Both sperms enter into the female gametophyte. These both sperms enter into the female, this is a female gametophyte, enter into the female gametophyte. One sperm fuses with the egg, one sperm fuses with this egg. Sperm is haploid and this egg is also haploid. N plus N mean 2N. When egg and sperm fuse and form a diploid zygote. This zygote is diploid when two cells fuse, and these two cells are egg nucleus and sperm nucleus. When these two nuclei fuse, they form a zygote, and two nuclei fuse, and this zygote is diploid, not haploid. This is when haploid in N plus N fuse, then it form diploid, meaning 2N zygote. The other sperm, how many sperms are present in the tube? In the pollen tube, two sperms are present in the pollen tube. One sperm fuses with the egg nucleus and form zygote. This zygote is diploid. This zygote, and the other sperm, this is other sperm, fuses with the, in the center, fusion nucleus is present here. Fusion nucleus, ये फ्यूजन न्यूक्लियस कितने न्यूक्लियाई के फ्यूज करने से बना था? टू न्यूक्लियाई के फ्यूजन से बना था, ठीक है. दिस इज फ्यूजन न्यूक्लियस. वन स्पर्म, और ये क्या हो गया? टू न्यूक्लियाई जब फ्यूज हुए तो ये ऑलरेडी डिप्लाइड था, एक इसके साथ और स्पर्म फ्यूज हुआ, क्या हो गया? ट्रिप्लाइड. Fuses with the diploid fusion nuclear and form a triploid nucleus called endosperm nucleus. Triploid nucleus 1, 2, and 3. This third is sperm. Form a triploid nucleus, and this triploid nucleus is called endosperm nucleus. Formation of embryo and endosperm. From the zygote, this zygote develop into embryo, and endosperm, this endosperm nucleus develops into endosperm tissues which contain food for the growing embryo. Endosperm tissue, endosperm nucleus develops into the endosperm tissue, and this tissue contains food for the growing embryo. Ovule then become, this is the ovule then becomes seed. और सीड के अंदर क्या क्या है? एम्ब्रियो
और एंडोस्पर्म टिश्यू। और ये बाहर क्या चीज है, ये जो वॉल थी इसकी, ये वॉल थी ये ओव्यूल की, ये वाली वॉल, इट फॉर्म सीड कोट। तो ये क्या बन गया, सीड। एंड ovary, this is the ovary wall. Ovary changes into the fruit. ओव्यूल से क्या बन जाएगा, सीड, और ओवरी से फ्रूट। When seeds mature, they are dispersed. If seeds get suitable conditions, if seed get suitable condition, their embryo develop into a new diploid sporophyte, develop into a diploid sporophyte of the next generation. ये नेक्स्ट जनरेशन बनाएगा सीड, ये जर्मिनेट करेगा, इसके अंदर जो एम्ब्रियो है सबसे पहले ये इसका जो रेडिकल है वो डेवलप होके सीड बनाएगा, और प्लोम्यूल डेवलप होके शूट बनाएगा, और ये छोटा सा प्लांटलेट है, इसको कहते हैं सीडलिंग। लाइफ साइकिल ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, लाइफ साइकिल ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, the two reproductive valves of the flower are androecium and gynoecium. Androecium, individual units of androecium क्या क्या हैं, stamen, stamen के two parts हैं, filament and anther. In the anther, pollen sacs are present. In the pollen sacs, microspores are produced. Haploid microspore are produced by the process of meiosis. This is diploid. This is diploid microspore. मदर सेल जो है वो हमेशा क्या होता है, डिप्लाइड होता है। अब इसमें मदर सेल में क्या होती है, मियोसिस, फर्स्ट मियोसिस, सेकंड मियोसिस। हाउ मेनी सेल्स आर फाउंड, 4 cells. each of these each of these cell each cell germinate, and one nucleus divided into two nuclei. One nucleus of microspore divided into two nuclei. This microspore is now haploid. Why haploid? क्योंकि क्या चीज, कौन सा प्रोसेस हो चुका है, मियोसिस। पहले ये क्या था, ये वाला डिप्लाइड था, इसमें मियोसिस हुई, 4 हैप्लाइड सेल्स बने। अब ये हैप्लाइड है, अब माइटोसिस से भी जो आगे सेल्स फर्दर प्रोड्यूस होंगे वो भी हैप्लाइड होंगे। जैसे एक न्यूक्लियस है, इस ये डिवाइड हुआ 2 न्यूक्लियाई में, तो ये दोनों न्यूक्लियाई क्या है, हैप्लाइड है बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। एक को क्या कहेंगे, जनरेटिव न्यूक्लियस, और दूसरा क्या है, ट्यूब न्यूक्लियस। जनरेटिव न्यूक्लियस, ट्यूब न्यूक्लियस। नेक्स्ट यू कैन सी हियर, ये क्या चीज है, ये गाइनेशियम। गाइनेशियम के अंदर क्या है, ये 3 पार्ट्स हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। ओवरी में क्या है, ओव्यूल्स। अब एक ओव्यूल के अंदर देखते हैं कि यहाँ ये मेगास्पोर मदर सेल है, अंडर गो मियोसिस 2 times। फर्स्ट मियोसिस में कितने सेल्स बने, 2, और सेकंड में 4 सेल्स बने, उनमें से 3 डीजनरेट कर जाएंगे, बाकी कितने बच के, एक सेल बच गया, और वो एक सेल जो है वो 3 times क्या होंगी, उसमें माइटोसिस होंगी। कितने सेल्स बन जाएंगे, 8 सेल्स बनेंगे। वो अपने आप को इस ओव्यूल के अंदर रीअरेंज करेंगे, 3 इस साइड पे, 3 इस साइड पे आ जाएंगे, और 2 सेंटर में, 3 इस पोल पे, 3 इस पोल पे, और 2 किधर आ जाएंगे, सेंटर। टोटल कितने हो गए, 8। और दिस इज फीमेल गैमीटोफाइट एंड दिस इज मेल गैमीटोफाइट। अब जो है ये जब पोलन ग्रेन मेच्योर हो जाता है, तो ये कहाँ पे फॉल करता है, स्टिग्मा पे। स्टिग्मा पे जब फॉल करता है तो इसका जो ट्यूब न्यूक्लियस है वो ट्यूब बनाता है, बाकी 2 जनरेटिव, एक जो स्पर्म था, एक जनरेटिव न्यूक्लियस डिवाइडेड इनटू 2 स्पर्म्स, एंड दिस फॉर्म ट्यूब न्यूक्लियस। अब ट्यूब न्यूक्लियस जो है वो क्या होगा, ट्यूब न्यूक्लियस इंटर होगा ओव्यूल में थ्रू माइक्रोपाइल, एंड इसमें से एक, अब इस ट्यूब न्यूक्लियस में कितने स्पर्म्स हैं, 2। 1 sperm fuses with the egg cell and form diploid
zygote, or the one nucleus fused with this diploid. Two nuclei are present here. Diploid endosperm nucleus or fusion nucleus, and form a triploid nucleus. This is called triploid nucleus is called endosperm nucleus. Endosperm triploid nucleus. This is called two न्यूक्लियाई ये आप देख सकते हैं यहाँ पे एक न्यूक्लियस जो है वो है स्पर्म न्यूक्लियस। ये 3 न्यूक्लियाई जब फ्यूज करेंगे तो क्या बन जाएगा, ट्रिप्लाइट nucleus, and this is called endosperm nucleus, and this process is called fertilization, क्योंकि ये दो फ्यूजन्स हुई हैं। एक दो स्पर्म्स थे, दो फ्यूजन्स की हैं। एक स्पर्म किसके साथ फ्यूज हुआ है, एग सेल के साथ, और दूसरा किसके साथ फ्यूज हुआ, फ्यूजन न्यूक्लियस या पोलर न्यूक्लियस के साथ फ्यूज हुआ है। और ये दो फर्टिलाइजेशन हुई है, इस वजह से इसको क्या कहते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। इसमें जो जायगोट है इट चेंजेस इनटू द एम्ब्रियो, और जो एंडोस्पर्म nucleus it changes into the endosperm tissue, and it contains food for the growing embryo। और ये outside wall of the ovule ये सीड कोट बन जाएगा, ठीक है। और जब सीड जर्मिनेट करेगा तो पहले तो रूट बनेगी, फिर शूट, उसके बाद एक क्या बन गया, स्पोरोफाइट फॉर द नेक्स्ट जनरेशन। एंड दिस स्पोरोफाइट, क्योंकि ये एम्ब्रियो जो ये वाला जाइगोट था डिप्लाइड था, फिर ये एम्ब्रियो डिप्लाइड है, आगे ये जो स्पोरोफाइट है ये भी क्या है, डिप्लाइड। एक बार फिर आप इसको देखेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे दिस इज एंथर। क्या चीज प्रोड्यूस होती है, पहले पोलन सैक में माइक्रोस्पोर मदर सेल है, वो तो डिप्लाइड होता है हमेशा। मदर सेल जो होता है वो डिप्लाइड होता है, उसमें मियोसिस हुई तो क्या बने, माइक्रोस्पोर्स, दे आर हैप्लाइड। और माइक्रोस्पोर जब जो है क्या है, मेच्योर होता है, तो ये क्या होता है, वन न्यूक्लियस इज डिवाइडेड इनटू टू न्यूक्लियाई। वन न्यूक्लियस इज डिवाइडेड इनटू टू न्यूक्लियाई। one nucleus is called generative nucleus and other is called tube nucleus। इस स्ट्रक्चर को आप क्या कहेंगे, मेल गैमेटोफाइट, ये क्या है, हैप्लाइड है। बेशक ये माइटोसिस के प्रोसेस से हो रहे हैं, लेकिन मियोसिस हो चुकी है, ये हैप्लाइड है, तो माइटोसिस में भी ये क्या रहेंगे, हैप्लाइड ही रहेंगे। इसके बाद वन इज ट्यूब न्यूक्लियस एंड अदर इज जनरेटिव न्यूक्लियस। इसके बाद आप ये देख सकते हैं, व्हेन द पोलन ग्रेन्स मैच्योर दे फॉल ऑन द स्टिग्मा, एंड क्या बनती है, पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब कैसे बनती है कि ये पोलन ट्यूब बनती है, और ये कौन बनाता है, ट्यूब न्यूक्लियस। और जो स्पर्म्स है, ये जनरेटिव न्यूक्लियस है, ये कितने में डिवाइड हो जाएगा, टू में। बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस टू न्यूक्लियाई बनेंगे, और इनको क्या कहते हैं, टू स्पर्म्स। और ये फिर कहाँ पे इंटर होगा, इनटू द ओव्यूल। ओव्यूल में ये सेंट्रल क्या है, एग, एक जो स्पर्म है एग के साथ फ्यूज करेगा, और ये वन स्पर्म फ्यूज विद द एग एंड फॉर्म डिप्लाइड zygote, and one cell, one sperm fuse with other sperm fuse with the fusion nucleus, and this is diploid। और एक ये वाला स्पर्म आया, क्या हो गया, ट्रिप्लाइड, और इसने क्या बनाया, ट्रिप्लाइड न्यूक्लियस, एंड दिस इज कॉल्ड एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। दो फर्टिलाइजेशन हुई, एक से क्या बना, डिप्लाइड zygote, और दूसरी फर्टिलाइजेशन से ट्रिप्लाइड एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, एंड दिस इज कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन। इसके बाद जो ये है, ये सेंटर में एग जो zygote है डिप्लाइड, ये क्या इसमें चेंज हो जाएगा एम्ब्रियो, और ये एंडोस्पर्म न्यूक्लियस changes into endosperm tissue, and it contains food for the development of embryo। और ये जो आउटर कवरिंग है, इसको क्या कहते हैं, सीड कोट। ये पूरा एक सीड डेवलप हो गया। फिर सीड की जब जर्मिनेशन होती है, जब सूटेबल कंडीशंस होती हैं, वो क्या होगा, ये जर्मिनेट करेगा। सबसे पहले एम्ब्रियो के दो पार्ट्स हैं, एक है रेडिकल और दूसरा है फ्लोम्यूल। रेडिकल से सबसे पहले
रेडिकल से रूट्स डेवलप होंगी और उसके बाद प्लोम्यूल से शूट डेवलप होगी और एक छोटा सा प्लांटलेट बन जाएगा. दिस इज द क्योंकि ये जो था जाइगोट डिप्लाइड था, एम्ब्रियो भी डिप्लाइड होगा, आगे जो इससे प्लांट बनेगा वो भी डिप्लाइड होगा. वो क्या है? स्पोरोफाइट है, और ये स्पोरोफाइट है फॉर द नेक्स्ट जनरेशन. और फिर ये जब बड़ा हो जाएगा तो फ्लावरिंग होगी और ये सब कुछ फिर प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा. You can see here double fertilization. Double fertilization. This is a flower. You can see here anther. This is carpel, stigma style, and ovary. In ovary, inside the ovary, ovule is present. Ovule, ये देख सकते हैं आप, ये कितने सेल्स प्रोड्यूस हुए पहले. फर्स्ट मियोसिस से 2 और सेकंड मियोसिस से 4 सेल्स प्रोड्यूस हुए. दीज आर हैप्लॉइड सेल्स, एंड इनमें से 3 जो हैं वो डीजनरेट हो जाएंगे, 1 रह जाएगा. अब ये 1 3 टाइम्स डिवाइड होगा बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस, लेकिन ये रहेगा हैप्लॉइड. ये फर्स्ट माइटोसिस, this is second mitosis, and this is third mitosis. How many cells are formed? 8 cells are formed. और ये अरेंजमेंट देखें, 3 इधर अरेंज होंगे, 3 इधर अरेंज हो जाएंगे और 2 इन द सेंटर. ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, ये वाले जो हैं ये नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं फॉर दिस फ्यूजन न्यूक्लियस को, नरिशमेंट देते हैं यानी खुराक देते हैं. और ये जो 3 है इनमें से जो सेंट्रल ये वाला जो सेल है, दिस इज एग सेल. ठीक है, ये फीमेल गैमेटोफाइट है, और ये जो फ्यूजन न्यूक्लियस है ये क्या हो गया, यूज करके डिप्लाइड न्यूक्लियस बन गया है. दिस इज फ्यूजन न्यूक्लियस, दिस इज डिप्लाइड, बाकी सारे हैप्लॉइड हैं. दिस इज एंथर. एंथर के अंदर माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस होंगे बाय द प्रोसेस ऑफ हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर बाय द प्रोसेस ऑफ meiosis. And haploid के बाद ये 2 nucleus थे, the 1 nucleus divided into 2 nuclei by the process of mitosis. One is tube nucleus and other is generative nucleus. Tube nucleus, when this pollen grain mature, it falls on the stigma और फिर अब start growing. Tube nucleus form tube और ये pass हो गया from the style, then ovary, ovule, ये ovule में enter हुआ, और 1 sperm nucleus divided into 2, one generative nucleus divided into 2 sperms. One sperm fuses with the egg cell and form diploid zygote, and other sperm fuses with the fusion nucleus and form triploid nucleus, and this triploid nucleus is called endosperm nucleus. This is zygote, and this is called double fertilization. We know that in angiosperms, parent plant is diploid sporophyte generation. Flower is the reproductive structure in this generation. What is pollination? Pollination is defined as the transfer of pollen grain from flower's anther to stigma. 2 types of pollination are recognized: self-pollination, cross-pollination. Self-pollination is the transfer of pollen grains from the
फ्लावर आर द अदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। एक ही प्लांट के अगर दो फ्लावर्स भी के भी में भी पोलिनेशन होती है तो वो भी सेल्फ पोलिनेशन होगी, एक ही प्लांट के जो दो फ्लावर्स होंगे। ठीक है, तो ये जैसे आप देख सकते हैं, पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर are transferred to the stigma, style, ovary, and this is ovule. Next, cross-pollination is the transfer of pollen grain from the flower on one plant to the flower on other plant of the same species. Cross-pollination मतलब एक पोलन ग्रेन एक प्लांट के फ्लावर से दूसरे प्लांट के फ्लावर पे के स्टिग्मा पे जाएंगे, लेकिन ये दोनों एक ही स्पीशीज से बिलोंग करेंगे, सेम स्पीशीज होनी चाहिए। Cross pollination is brought about by various agents like wind, water, bees, birds, bats, and other animals, including man. This is cross pollination। एक प्लांट के फ्लावर जो है उसके एंथर पोलन ग्रेन, उसके एंथर से पोलन ग्रेन ट्रांसफर होंगे टू द स्टिग्मा ऑफ द अदर फ्लावर, बट अदर प्लांट, बट दोनों जो प्लांट्स होंगे दे बिलोंग टू द सेम स्पीशीज। The insect pollinated and wind pollinated flowers have structural adaptation that facilitate the transfer of pollen grain between two plants. Adaptation in insect pollinated and wind pollinated flowers. Features, फिर हम देखते हैं insect pollinated flowers और wind pollinated flowers। साइज देखेंगे, इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर्स की जो साइज है क्या होता है, लार्ज। विंड पोलिनेटेड फ्लावर्स का साइज स्मॉल। कलर, इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर्स पेटल्स ब्राइटली कलर्ड, जो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करती हैं, पेटल्स ब्राइटली कलर्ड। बट इन केस ऑफ विंड पेटल्स ग्रीन और डल इन कलर, क्योंकि विंड को कोई कलरफुल की जरूरत नहीं है। नेक्टर, नेक्टर नेक्टर प्रोड्यूस करते हैं, जैसे इंसेक्ट क्यों जाता है फ्लावर में नेक्टर लेने के लिए, इट मींस इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर प्रोड्यूस नेक्टर, बट विंड पोलिनेटेड फ्लावर डू नॉट प्रोड्यूस नेक्टर। फ्लोरल अरेंजमेंट्स, फ्लावर्स फेस अपवर्ड, ऊपर की तरफ फ्लावर होता है उसको फेस। फ्लावर हैंग्स डाउन, क्योंकि डाउन जब हैंग करता है तो हवा जब चलती है तेजी से तो वो जो उसके अंदर पोलन ग्रेन्स होते हैं वो फिर क्या होता है, इजीली स्प्रेड यानी डिस्पर्स हो जाते हैं। फ्लावर्स हैंग डाउन फॉर इजी शेकिंग। स्टेमन एंड स्टिग्मास, स्टेमन एंड स्टिग्मास इनक्लोज्ड, ये किसके अंदर इनक्लोज्ड है, इनक्लोज्ड इनसाइड द रिंग ऑफ पेटल्स, पेटल्स के अंदर होते हैं इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर ये, लेकिन इसमें हैंग आउट ऑफ द रिंग ऑफ पेटल्स, पेटल्स से बाहर होते हैं ताकि इजीली विंड जब है उनको हवा अपने साथ ले जाए। पोलन ग्रेन्स, स्मॉल नंबर प्रोड्यूस्ड, इनका पोलन ग्रेन्स जो है इसमें क्योंकि इसके ज़ाया होने के कम चांसेस होते हैं, दे आर प्रोड्यूस इन स्मॉल नंबर एंड हैवी एंड स्टिकी, स्टिकी भी होते हैं, हैवी भी होते हैं और स्मॉल इन नंबर। बट विंड पोलिनेटेड फ्लावर्स लार्ज नंबर प्रोड्यूस्ड, लार्ज नंबर प्रोड्यूस होगा, लाइट विद स्मूथ सरफेसेस, इनका वेट जो है वो क्या होता है, लाइट होता है और स्मूथ सरफेसेस होती हैं, स्टिकी नहीं होती हैं, और इनका लार्ज नंबर इसलिए होता है क्योंकि इनके ज़ाया होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। स्टिग्मा, इसकी शेप कैसी होती है स्टिग्मा की, इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर्स में पिन हेड शेप विथ नो ब्रांचेस, पिन का जो हेड होता है जैसी उसकी शेप होती है इसी तरह इसकी होती है और कोई ब्रांचेस नहीं होती। लेकिन विंड पोलिनेटेड फ्लावर्स फीदरी ब्रांचेस फॉर कैचिंग, वो विंड कर रही है ना, बाय चांस कोई एक का वहां पे गिर जाएगा, अगर उस पे गिर भी जाता है स्टिग्मा पे विंड पोलिनेटेड फ्लावर में
तो वो इजीली कैच कर सके, इसलिए ये फीदरी होता है। ये आप देख सकते हैं, ये इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर्स फेस अपवर्ड बट विंड पोलिनेटेड फ्लावर्स फेस डाउनवर्ड। और इनके कलर्स डल होते हैं, इनके ब्राइट कलर्स होते हैं। और ये नेक्टर प्रोड्यूस नहीं करते, ये नेक्टर प्रोड्यूस करते हैं। और इनका साइज लार्ज होता है, ये स्मॉल साइज, ये तो मैनी फ्लावर्स आर प्रेजेंट हियर, इनका साइज जो है स्मॉल होता है। और इसके अलावा जो वो है स्टिग्मा और स्टिग्मा एंड एंथर्स क्या होते हैं, बाहर की तरफ होते हैं, लेकिन इसमें पेटल्स के अंदर ही अरेंज होते हैं। ठीक है, ये सारा कुछ था। अडॉप्टेशंस हैं in insect pollinated and wind pollinated flowers. Examples of insect pollinated flowers are buttercup, rose, wallflower, sunflower, orchid. Examples of wind pollinated flowers are grasses, hazel, willow, corn. What is parthenocarpy? In some plants, ovaries develop into fruit without fertilization inside their ovules. This process is known as parthenocarpy. Without fertilization, carpy mean carpal. यानी ये plants में होता है. Without fertilization, ovary changes into fruit. And it results in seedless fruits, for example, bananas and seedless varieties of grapes. तो जाहिर बात है फर्टिलाइजेशन नहीं हुई तो सीड्स भी नहीं बनेंगे, लेकिन ओवरीज डेवलप इनटू फ्रूट। सिमिलरली आपने पढ़ा था पार्थिनोजेनेसिस में भी इसी तरह होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो दिस इज आल्सो अ टाइप ऑफ asexual reproduction, parthenocarpy, in which there is no fertilization. Here is your assignment. Question number 1. The flower is actually a condensed dash with the node present very close to each other. Dash is the outermost whorl. It is usually green in color. Nucleus of microspore undergoes mitosis and produces two nuclei, that is, tube nucleus and dash. Also draw life cycle of flowering plant. Thank you. Allah Hafiz.